Physics Thermodynamics is the branch of physics that deals with the concepts of heat and temperature and the interconversion of heat and other forms of energy. Thermodynamics is a macroscopic science. It deals with bulk systems and does not go into the molecular constitution of matter. In fact, its concepts and laws were formulated in the 19th century before the molecular picture of matter was firmly established. Thermodynamic description involves relatively few macroscopic variables of the system, which are suggested by common sense and can be usually measured directly. A microscopic description of a gas, for example, would involve specifying the coordinates and velocities of the huge number of molecules constituting the gas. The description in kinetic theory of gases is not so detailed, but it does involve molecular distribution of velocities. Thermodynamic description of a gas, on the other hand, avoids the molecular description altogether. Instead, the state of a gas in thermodynamics is specified by macroscopic variables such as in a different context. We say the state of a system is an equilibrium state if the macroscopic variables that characterize the system do not change in time. For example, a gas inside a closed rigid container, completely insulated from its surroundings, with fixed values of pressure, volume, temperature, mass and composition that do not change with time, is in a state of thermodynamic equilibrium. भौतिकी ऊष्मागतिकी भौतिकी की वह शाखा है जो ऊष्मा और तापमान की अवधारणाओं और ऊष्मा तथा ऊर्जा के अन्य रूपों के अंतर रूपांतरण से संबंधित है। ऊष्मागतिकी एक स्थूल विज्ञान है। ये थोक प्रणालियों से संबंधित है और पदार्थ के आणविक गठन में नहीं जाता है। वास्तव में, इसकी अवधारणाएं और नियम 19वीं शताब्दी में तैयार किए गए थे, जब पदार्थ की आणविक तस्वीर दृढ़ता से स्थापित नहीं हुई थी। ऊष्मागतिकी विवरण में प्रणाली के अपेक्षाकृत कुछ स्थूल चर शामिल होते हैं, जो सामान्य ज्ञान द्वारा सुझाए जाते हैं और आमतौर पर सीधे मापा जा सकता है। उदाहरण के लिए, गैस का सूक्ष्म विवरण गैस का गठन करने वाले अणुओं की विशाल संख्या के निर्देशांक और वेगों को निर्दिष्ट करना शामिल करेगा। गैसों के गतिज सिद्धांत में विवरण इतना विस्तृत नहीं है, लेकिन इसमें वेगों का आणविक वितरण शामिल है। दूसरी ओर, गैस का ऊष्मागतिकी विवरण आणविक विवरण से पूरी तरह से बचता है। इसके बजाय, ऊष्मप्रवैगिकी में गैस की स्थिति मैक्रोस्कोपिक चर द्वारा निर्दिष्ट की जाती है, जैसे कि एक अलग संदर्भ में हम कहते हैं कि एक प्रणाली की स्थिति एक संतुलन अवस्था है यदि मैक्रोस्कोपिक चर जो सिस्टम की विशेषता रखते हैं, समय के साथ नहीं बदलते हैं। उदाहरण के लिए, एक बंद कठोर कंटेनर के अंदर एक गैस, जो अपने परिवेश से पूरी तरह से अछूता है, दबाव, आयतन, तापमान, द्रव्यमान और संरचना के निश्चित मूल्यों के साथ जो समय के साथ नहीं बदलते हैं, थर्मोडायनेमिक संतुलन की pressure, volume, temperature, mass and composition that are felt by our sense perceptions and are measurable. The distinction between mechanics and thermodynamics is worth bearing in mind. In mechanics, our interest is in the motion of particles or bodies under the action of forces and torques. Thermodynamics is not concerned with the motion of the system as a whole. It is concerned with the internal macroscopic state of the body. When a bullet is fired from a gun, what changes is the mechanical state of the bullet, its kinetic energy, in particular, not its temperature. When the bullet pierces a wood and stops, the kinetic energy of the bullet gets converted into heat, changing the temperature of the bullet and the surrounding layers of wood. Temperature is related to the energy of the internal, disordered, motion of the bullet, not to the motion of the bullet as a whole. 12.2 Thermal equilibrium. Equilibrium in mechanics means that the net external force and torque on a system are zero. Fig.
12.1 A. Systems A and B, two gases, separated by an adiabatic wall, an insulating wall that does not allow flow of heat. B. The same systems A and B separated by a diathermic wall, a conducting wall that allows heat to flow from one to another. In this case, thermal equilibrium is attained in due course. In general, whether or not a system is in a state of equilibrium depends on the surroundings and the nature of the wall that separates the system from the surroundings. Consider two gases A and B occupying two different containers. We know experimentally that pressure and volume of a given mass of gas can be chosen to be its two independent variables. Let the pressure and volume of the gases be PV and PV respectively. Suppose first that the two systems